Hare Krishna. Hare Krishna. So I'm very happy to be here with all of you. Juhu is Srila Prabhupada's office. And so here, whenever we come to Juhu, we remember Srila Prabhupada who was on a mission. Once Srila Prabhupada, he came to America and there was an Indian reporter in the room. So the Indian reporter put his hand up and he said, "Why have you come to America?" So the Srila Prabhupada looked back at the Indian reporter and said, "Why have you come to America?" So the reporter said, "I came for better opportunities." Prabhupada said, "Me too." He said, "But you came for better opportunities to take." But I came for better opportunities to serve, to give, to contribute, to make other people's lives better. लेकिन मैं आया हूँ ताकि अच्छे अवसर को आप सबको दे सकूं, ताकि आप सबके जीवन को और अच्छा बना सकूं। So when we come here to Juhu, first we remember Srila Prabhupada. तो हम जब यहाँ जुहू में आते हैं, तो पहले तो हम याद करते हैं श्रील प्रभुपाद को। When I came to this movement, I read Krishna book, I read Bhagavad-gita, I read many shastra. But when I read about the life of Srila Prabhupada, then I became convinced this is something amazing. जब मैं संस्था में आया था तो मैंने कृष्ण बुक पढ़ा था, भागवतम पढ़ा था, भगवद-गीता पढ़ा था। लेकिन जब मैंने श्रील प्रभुपाद की जीवनी पढ़ी थी, तब मैं कन्विंस हो गया था कि ये जो है एक अद्भुत पथ है। Because Srila Prabhupada's life is the living example. He is the person Bhagavata. क्योंकि श्रील प्रभुपाद का जो जीवन है, वो उदाहरण है कि वो एक भागवत है। So when we come to Juhu, we remember Srila Prabhupada and we remember Srila Prabhupada's mission, and to see all of you here who are so much part of that mission brings great joy to the heart. तो मेरे हृदय को बड़ा आनंद प्राप्त होता है जब मैं यहाँ आता हूँ, श्रील प्रभुपाद को याद करता हूँ, श्रील प्रभुपाद के मिशन को याद करता हूँ, और जब आप सबको देखता हूँ जो इस मिशन में बहुत ही जबरदस्त तरीके से भाग ले रहे हैं, तो मेरे हृदय को बड़ा आनंद मिलता है। So today we will speak very short from Bhagavad-gita, and then we'll give all of you the opportunity. Perhaps you have some question or something you would like to know more about. तो आज हम कुछ भगवद गीता से बोलेंगे और फिर आप सबको मौका मिलेगा कि आप सबके मन में अगर कुछ प्रश्न है या कुछ जिज्ञासा है या कुछ बोलना चाहते हैं तो आप सबको अवसर है। In Satya Yuga, the Ganga came into the earth planet having come through the feet of Lord Vishnu. सत्य युग में गंगा माँ आई थी भगवान विष्णु के कमल चरणों से। It's said that in Kali Yuga, that same Ganga is coming out of the eyes of Sri Chaitanya Mahaprabhu when he sheds tears in the Prema Kirtan of Krishna. कहते हैं कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के आंखों से जो अश्रु निकलते हैं वही गंगा माँ के रूप में आती है। And it's said that in Dwapara Yuga, that same Ganga was coming out of the mouth of Krishna in the form of the words of the Bhagavad-gita. वही गंगा जो है द्वापर युग में भगवान कृष्ण के मुखारविंद से भगवद-गीता के रूप में आती है। So if you want to reach the feet of Krishna, then you take bath in the Ganga.
तो अगर आप भगवान के कमल चरणों तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको गंगा मां में स्नान करना होगा। If you want to enter into the Lord's heart, then dive into the prema kirtan and the ocean of loving tears that are there, and you will enter the Lord's heart. तो अगर आपको भगवान के हृदय में प्रवेश पाना है तो आपको भगवान के प्रेम कीर्तन में भाग लेना होगा। And if you want to come face to face with Krishna, then bathe your mind, your intelligence, your consciousness in the words of the Bhagavad-gita, because those words will flow and take you face to face with Krishna. अगर आपको भगवान के आमने सामने आना है तो अपने मन को, अपने हृदय को, अपनी चेतना को इस गंगा रूपी स्नान करना होगा। So we should not underestimate the power of the Bhagavad-gita. तो हमें भगवद गीता की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। Maline moshanam pumsham jalashnanam dine dine Gita shakret bhashishnanam samsara malanashanam. It's explained that just as every day we take bath in water to cleanse the physical body, every day one should bathe in the words of the Gita to cleanse the consciousness and the mind. जैसे हम हर रोज स्नान करते हैं ताकि शरीर की शुद्धि हो सके, उसी प्रकार से हमें गीता के वचनों में, श्लोकों में स्नान करना चाहिए ताकि हमारी चेतना शुद्ध हो सके। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalan Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki. In Bhagavad-gita, Krishna explains the effect of knowledge by giving 4 metaphors. भगवद गीता में भगवान कृष्ण जो समझाते हैं कि क्या प्रभाव है वो ज्ञान देने का, इस सब को 4 मुख्य शब्दों में बताते। यश सर्वा सवे रंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि कर्म दग्धानाम तमाहु पंडितम बुधा. The first thing Krishna says, knowledge, jnana agni. Knowledge is like a fire. पहली चीज भगवान बताते हैं कि ज्ञान जो है अग्नि के समान है। In this life we have many reactions that we are due to suffer
because of previous activities. इस जीवन में हमारे ऊपर बहुत सारे रिएक्शंस आने वाले हैं जो हमारे पहले की कर्मों की वजह से आएंगे. Everyone in this world is trying to escape their karmic reactions, but factually you cannot. Your karma will always catch up with you. सभी व्यक्ति संसार में भाग रहे हैं अपने कर्मों के फल से, उसकी पीड़ा से, लेकिन कर्म जो है आपको पकड़ ही लेगा. Once they opened a restaurant, a shop, and they said in this shop you can buy anything you want and you don't need to worry, your grandson will pay the bill. एक बार एक दुकान खोला गया और उस दुकानदार ने बोला सभी को कि आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपका पोता जो है वो पैसे दे देगा. So one man went in and he just went like all out. He just filled up his trolley. He bought so many things. No problem. My grandson will pay. तो एक व्यक्ति अंदर गया और उसने जो है भर भर के चीजें खरीद ली और उसको मन में यही था कि कोई बात नहीं, मेरा पोता दे देगा पैसा. So then he went to the checkout counter and the person scanned everything through and then the person gave him a bill. तो वो जो है कैश काउंटर में गया, चेकआउट काउंटर में, और उस व्यक्ति ने सभी जो सामान खरीदे थे उसको स्कैन किया और फिर उसको बिल थमा दिया. He said, no, there's a sign on the shop. Grandson will pay. नहीं, बाहर दुकान में बताया गया है कि पोता दे देगा पैसा. The person said, yeah, no worries. This is the bill from your grandfather. तो उस व्यक्ति ने जो काउंटर में बैठा था उसने कहा, हाँ, ये जो बिल मैं दे रहा हूँ ये आपके दादा का है. So therefore, karma will always come to us because there are lessons that we need to learn in our life. इसलिए ये कर्म जो है हमारे साथ हमेशा रहने वाला है क्योंकि कुछ शिक्षा है जो हमें सीखना है इनसे. Most people will only learn something if they go through an experience. ज्यादातर व्यक्ति जो है सीखेंगे तब जब वो किसी अनुभव से गुजरेंगे. However, Krishna says if you read the Bhagavad-gita, if you deeply understand this knowledge and if you embed this wisdom into your heart, then this gyan becomes like a agni, like a fire which will destroy all of your reactions. तो भगवान फिर भी कहते हैं कि अगर इस गीता रूपी ज्ञान को समझोगे, बात अपनी गहराई में डालोगे, हृदय में प्रवेश करने दोगे, तो ये गीता जो है अग्नि रूप में, ज्ञान जो है अग्नि रूप में आपके ज्ञान को जला देगी. If you want to save yourself from suffering in this life, then read the Bhagavad-gita deeply. अगर अपने आप को पीड़ा से बचाना चाहते हो तो भगवद गीता को जो है बड़ी गहराई से आपको पढ़ना है, समझना है. Krishna through the Bhagavad-gita is reaching out his hands and saying, come nicely with me to the spiritual world by understanding this knowledge. कृष्ण जो है अपने दोनों हाथों को आपकी ओर बढ़ा रहे हैं और बोल रहे हैं कि बड़े अच्छे से आप मेरे साथ आओ आध्यात्मिक जगत में. कैसे? इस गीता रूपी ज्ञान को पढ़कर. But if we don't listen, then Maya comes round the back and gives you a big kick. लेकिन अगर इसको गीता को पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो माया जो पीछे से आएगी और आपको लात मारेगी जोर से. Once we were having a debate in the Brahmachari ashram, can brahmacharis play football? एक बार ब्रह्मचारी आश्रम में डिबेट हो रहा था दो पक्षों के बीच में, क्योंकि ब्रह्मचारी जो है फुटबॉल खेल रहे थे. So everyone was looking on Vedabase for references for football. तो सभी जो है डेटाबेस में ढूंढ रहे थे कि फुटबॉल के ऊपर कुछ मिलेगा क्या हमें. And then Srila Prabhupada said in one reference, life is like a game of football. श्रील प्रभुपाद ने एक जगह पे बताया है कि जीवन जो है फुटबॉल की खेल की तरह है. He said the only problem is you think you are the player, but actually you're the football. एक ही तकलीफ है, आपको लगता है कि आप खिलाड़ी हैं, लेकिन एक्चुअली आप वो फुटबॉल हैं. So we are being kicked around by Maya.
तो माया जो है हमें हर बार जो है लात मार रही है। Krishna bahir mukha hoya Bhagavan chakore nikata stamaya tare japatiya dhare. If you turn away from Krishna and try to enjoy in this world, nikata sta, close by, Maya is there, japatiya dhare, and she'll slap you down. हम जो है कृष्ण से बहिर्मुख हो जाते हैं, अपना पीठ दिखाते हैं, लेकिन माया जो है नजदीक में है ताकि आपको थप्पड़ दे सके। Maya is an equal opportunities employer. माया जो है सभी को समान रूप से मौका देती है। So the beautiful opportunity is that if we read this knowledge, then this jnana becomes like a agni. It removes all the reactions and releases us from the grips of Maya's material energy. तो हम कर्मों के फल से छूट सकते हैं और माया के जंजाल से भी छूट सकते हैं कब? जब भगवद गीता को बड़े गहरे रूप से पढ़ेंगे। In another verse, Krishna says, Apiche dashipapebhyo sarvebhya papakritama sarvam jnana plaveneva vrijinam santarishashi. In this verse, Krishna says, Jnana plava. Knowledge is like a boat. इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान जो है प्लवक मतलब एक नाव के समान है। This material world is like an ocean, and in the ocean of this material world there are so many problems, so many waves. ये भौतिक संसार जो है एक सागर के समान है और इस सागर में बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारी लहरें हैं। Once Srila Prabhupada was stuck in a traffic jam, and outside he looked at the window and the sign said roadworks, temporary inconvenience, permanent solutions. एक बार श्रील प्रभुपाद जो है ट्रैफिक जाम में अटक गए थे। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, एक साइन था, साइन पे लिखा था कि रास्ते का काम चालू है, आपको थोड़े समय के लिए जो है तकलीफ होगी, लेकिन हमेशा के लिए आपको सुविधा होगी। Prabhupada started laughing. He said, material world means temporary improvements, permanent inconvenience. श्रील प्रभुपाद जो हंसने लगे और बोल रहे हैं कि भौतिक संसार का मतलब थोड़े समय के लिए सुविधा और हमेशा के लिए तकलीफ। So therefore, life will always be full of ups and downs. We always think, why I have so many problems? Everyone else's life is good. जीवन जो है हमेशा उतार चढ़ाव में होगा। हम हमेशा सोचते हैं कि मेरे जीवन में इतनी तकलीफ क्यों है, बाकी सब तो कितने आनंद में जी रहे हैं। But everyone has problems, everyone has difficulties, everyone has challenges, everyone has obstacles. Welcome to the material world. सभी के पास तकलीफ है, सभी के पास चुनौतियां हैं, सभी के जीवन में मुश्किलात आती हैं। आप सबका स्वागत है भौतिक संसार में। Once there was a sign in the car, do not disturb, already disturbed. एक बार गाड़ी के पीछे एक साइन था, उसमें लिखा था आप मुझे तकलीफ मत दीजिए क्योंकि मैं पहले से ही तकलीफ में हूँ। So we are always disturbed by so many anxieties, so many problems. Even now you are sitting here, but I can see the energy from your heads. Tension is there, some little bit, I'm sure. हम इतने तकलीफ में रहते हैं हमेशा। अभी भी मैं जब आप सबको देख रहा हूँ तो आपके सिर पे इतना टेंशन दिख रहा है, बहुत तकलीफ दिख रही है। But when we read the Bhagavad-gita, when we situate ourselves within the boat of knowledge, the jnana plava, then we become protected against the waves of the ups and downs. जब हम इस ज्ञान रूपी नाव मतलब भगवद गीता में बैठते हैं तो हम एक भौतिक संसार के लहरों से बचते हैं। In this knowledge, it helps us to remain free from anxiety. The knowledge helps us to understand that whatever problems I'm going through, I need to go through them. And these problems will bring me closer to Krishna. ये जो तकलीफ है, ये हमें चिंता मुक्त करते हैं और हमें समझाते हैं कि जो भी तकलीफों से हम गुजर रहे हैं,
उससे मुझे गुजरना पड़ेगा क्योंकि वो मुझे कृष्ण के नजदीक ले जाएगा। It's not that everything that happens in life is good, but something good can come from everything that happens in life. ऐसा नहीं है कि जो भी होने वाला है वो सब अच्छा होगा, लेकिन जो भी तकलीफ है या जो भी होगी वो हमें अवसर देती है कृष्ण के नजदीक आने। So knowledge is like a boat which protects us from distress. ज्ञान जो है वो नाव है जो हमें चिंता मुक्त करती है। Don't think you will become fearless by having an alarm on your house. Don't think you will become fearless by having an insurance policy for your car. Don't think you'll become fearless by taking all the medicines to protect yourself against disease. None of these things will make you fearless, only if you are situated in the boat of knowledge. आप ये मत सोचिए कि मैं अभय हो जाऊंगा अगर मैं घर में जो है अच्छे से अलार्म लगा दूंगा चोरों के लिए, या फिर मैं जो हूँ सिक्योरिटी बढ़ा दूंगा या दवाइयाँ लूंगा अलग अलग बीमारियों के लिए। आप सिर्फ तब अभय हो सकते हैं जब भगवान के कमल चरणों में स्थापित हो जाएं। Later on in Bhagavad-gita, Krishna will say, Deshamevanukam partham aham agyana jamtamaha nasayamyatma bhavasto jnana deepena bhashvata. Knowledge can also be likened to jnana deepena, a lamp. भगवद-गीता में भगवान आगे बताते हैं कि ज्ञान जो है एक दीप के समान भी है। We are living in a dark world. We are living in a dark time. We are living in a time when ignorance is very, very thick. This is Kali Yuga. हम जो है ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पर चारों तरफ अंधकार है और इस अंधकार में अज्ञान में जी रहे हैं। And when we're in the darkness of ignorance, then we cannot understand how to exit the room. We can't see the door out, the way out. और क्योंकि इस अज्ञान रूपी अंधकार में हैं, तो हमें दरवाजा नहीं दिखाई दे रहा है जिससे कि हम बाहर जा सकें। So when we are illumined by the Jnana Deepena, then Krishna says all the ignorance in the heart will disappear, and one will understand who am I, where do I need to go, and how do I get there. तो जब हम इस ज्ञान रूपी दीप में प्रकाशित हो जाते हैं, प्रकाश में आ जाते हैं, तो हृदय में जो अज्ञान के अंधकार है वो निकल जाते हैं, और तब हमें समझ में आता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, and how to get there. और फिर इस संसार के पार कैसे जाएं। Bhagavad-gita is like a GPS satellite navigator. भगवद-गीता जो है एक गूगल मैप GPS की तरह है। I tell you a funny story. एक बड़ा मजाकिया कथा बताता हूँ। It's not a funny situation, but we once went to attend a funeral. That's not the funny part. हम एक बार जो है किसी के अंतिम यात्रा में गए थे, ये मजाक वाली बात नहीं है। So we put the address in the satellite navigator. तो हम जो है navigator, satellite का जो navigator है, उसको बार-बार देख रहे थे। So then we came to the crematorium and we parked the car. तो हम शमशान घाट में आए और अपने गाड़ी को पार्क किया। And just as we parked the car, we saw in front of us a sea, an ocean of graves. और हमने देखा कि बहुत सारे जो लाशें हैं जो शमशान घाट में होती है, उसकी सागर है। And just as we were looking at all of these graves, then the satellite navigator said, "You have reached your final destination." True story. तो जब हम इस चिता के सागर को देख रहे थे, तब गूगल मैप ने बोला कि आप जो है अपने अंतिम स्थान पे आ चुके हैं। Today the GPS was giving the Bhagavad-gita class. आज GPS जो है भगवद-गीता का कक्षा दे रहा है। Jnana Deepena Bhashvata, this knowledge illumines us to the reality of life. Otherwise, we are just in ignorance. ये ज्ञान जो है हमें प्रकाशित देता है, जो संसार की जो जीवन की सच्चाई है उसके बारे में बताता है, नहीं तो हम अज्ञान के अंधकार में तो हैं। Everyone is ignoring the realities of life. सभी ये जो है अनदेखा कर रहे हैं जीवन की सच्चाई को। Imagine you're going to watch a movie and then
on the way to the movie, you meet someone and they say, "Oh, that movie?" You'll never guess what happens at the end. कल्पना कीजिए कि आप सिनेमा देखने निकले हैं और रास्ते में आपको कोई व्यक्ति मिलता है और बोलता है, अरे वो सिनेमा, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि अंत में क्या होगा। You will say, "Don't tell me the end. If you tell me the end, how I will enjoy the show?" आप बोलोगे अंत मत, मुझे अंतिम जो भाग है वो मुझे मत बताओ, नहीं तो मुझे किसे आनंद आएगा। So no one wants to think about death. No one wants to think about disease. No one wants to think about old age. We want to ignore it, hoping it won't happen to us. हम जो है मृत्यु के बारे में नहीं सोचना चाहते, अंत के बारे में, बीमारी के बारे में नहीं सोचना चाहते, क्योंकि ये सोचेंगे तो आनंद कैसे आएगा? But it will. लेकिन ये होगा। Here we are on a Sunday afternoon in the high of Mumbai opulence in Juhu, and we are talking about death and we are laughing. यहाँ है हम रविवार के दोपहर में और ये स्थान है बॉम्बे का सबसे ऐश्वर्यशील स्थान जुहू में, और हम हंस रहे हैं मृत्यु के बारे में चर्चा करके। Tomorrow when you go to work, you can tell your friends, "I had a wonderful Sunday afternoon discussing death." कल जब आप अपने कार्यालय में जाएंगे, अपने मित्रों से आप बोलिएगा कि मेरा बड़ा जबरदस्त दिन गया क्योंकि मैंने मृत्यु के बारे में चर्चा की। You can tell them, "I learned life is like a game of chess. Whether you're the king, the queen or the pawn, at the end of the game, everyone ends up in the box." आप बताइएगा उन्हें कि जीवन जो है एक चेस के गेम की तरह है। आप राजा हो, रानी हो या वजीर हो या सिपाही हो, आपको तो अंत में बक्से के अंदर ही जाना है। But the knowledge of the Bhagavad-gita tells us, "Jadasya hi dhruvo mrityur dhruvam janma mritasya cha," that for whoever has taken birth, death is sure, but for whoever dies, birth is certain. भगवद-गीता में भगवान बताते हैं कि जो भी जन्म लेता है, मृत्यु तो आनी है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी होगा। Later on in Bhagavad-gita, Krishna will say, "Tasmad ajnana sambhutam ritstam jnana shinatmana chitvenam shamshayam yogam atisto dista bharata." Krishna will say, "Jnana ashina." Knowledge is like a sword. आगे कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान जो है तलवार की तरह है। In our hearts there are many doubts. Doubts about the philosophy, doubts about the movement, doubts about the devotees, doubts about our own strength and ability to practice Krishna consciousness. हमारे हृदय में बहुत सारी शंकाएं हैं। शंका है तत्व के बारे में, शंका है इस मूवमेंट के बारे में, शंका है भक्तों के बारे में, और शंका ये भी है कि मेरी शक्ति है कि नहीं भक्ति करने की। So Krishna says, if we are constantly doubting, then we can never attain the supreme destination. कृष्ण बताते हैं कि हम हमेशा अगर शंका करेंगे, संदेह में रहेंगे, तो परम धाम को कभी प्राप्त नहीं करेंगे। Agyascha shradadhanascha shamshayatma vinashyati nayam loko stinaparo nasukham samsayatmanaha. For the doubting soul, there is happiness neither in this life nor in the next. जो जीवात्मा संदेह करता है, शंका करता है, उसके लिए उसकी आनंद जो है इस जीवन में भी नहीं है और दूसरे जीवन में भी नहीं है। We are in a difficult situation because the devotees entered our lives and taught us that material life is a waste of time. हम जो है बहुत तकलीफदायक परिस्थिति में है, क्योंकि भक्तों ने हमारे जीवन में प्रवेश किया है और बोला है कि ये जो भौतिक संसार है वो सब बेकार है। But at the same time, we don't have the full faith in spiritual life, and therefore we're not quite able to find spiritual happiness. उसी समय हमें जो है पूर्ण विश्वास नहीं है आध्यात्मिक जीवन में, और इसी कारण बस
हमें जो है आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही। So we can't get there, and at the same time we can't go back to our old life. तो हम जो है उस परम आनंद के पास नहीं जा सकते, उसी समय हम जो है अपने जीवन में वापस नहीं जा सकते। ये दोनों अवस्था एक साथ नहीं हो सकता। When I joined the movement, one devotee said to me, joining Krishna consciousness is like joining the mafia. You can't leave because you know too much. जब मैंने कृष्ण भावना अमृत में शुरुआत की थी, तब एक भक्त ने बोला था कि ये कृष्ण भावना अमृत में आने का मतलब है कि आपने माफिया से जुड़ चुके हैं, क्योंकि आप इतना जान चुके हैं कि वापस नहीं जा सकते। But still so many doubts are there in our heart, and these doubts are blocking us from finding Krishna. क्योंकि इतने संदेह हैं हृदय में, और ये सारे संदेह जो है हमें रुकावट, हमारे रास्ते पर रुकावट पैदा कर रहे हैं कृष्ण की प्राप्ति की ओर। So Krishna says to Arjuna, slash all the doubts that have arisen within your heart with the sword of knowledge. कृष्ण कहते हैं कि जो भी संदेह आपके हृदय में आया है उसे ज्ञान के तलवार से काट दो। So this Bhagavad-gita and this knowledge of the Gita is so powerful. तो जो भगवद-गीता है और जो भगवद-गीता का ज्ञान है वो इतनी शक्तिशाली है। Jnana Agni, knowledge is like a ज्ञान अग्नि है। Jnana Plava, knowledge is like a ज्ञान जो है नाव की तरह है। Jnana Ashina, knowledge is like a sword. ज्ञान जो है तलवार की तरह है। Jnana Deepena, knowledge is like a ज्ञान जो है दीप की तरह है। And therefore Krishna says, Nahi jnanena sadrisham pavitram iha vidyate. That in this world there is nothing so sublime, nothing so pure, nothing so valuable as transcendental knowledge. इस संसार में इससे सूक्ष्म, इससे मूल्यवान और इससे दिव्य नहीं है कोई भी, वो क्या है? दिव्य ज्ञान। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. So I won't speak too long. These were just some thoughts that I wanted to share with you as a warm-up. And then perhaps you have some questions or something you would like to know more about. तो मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे कुछ विचार थे ताकि आप सबको जो है वार्म अप करा सके। और अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप जो है प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आप जिनको भी प्रश्न है आप हाथ ऊपर करिए और आप हिंदी में पूछ सकते हैं प्रश्न, तो हमारा प्रभु जी ट्रांसलेट करेंगे महाराज के लिए। Please raise your hands. Hare Krishna, Hare Krishna, thank you Maharaj for such a very enlightening session. We got such a wonderful points from this session. My question, Maharaj, sometimes we know these verses and even we recite it, but at the time of applying it, we fail. कभी-कभी हमें श्लोक पता होता है। Yeah, of course. कभी-कभी हमें श्लोक पता होता है, लेकिन हम जब जीवन में उसको अप्लाई करने जाते हैं तो हम जो है असफल हो जाते हैं। So how to really get this realization that yes, this is the only shelter and I have to apply this only. तो ये साक्षात्कार कैसे हो कि यही जो है असली सॉल्यूशन है और इसे ही मुझे अपने जीवन में लगाना है। In spiritual learning, we go through 4 stages: Shravanam, Mananam, Nididhyasanam, Vandanam. आध्यात्मिक जीवन में हम 4 स्तरों से गुजरते हैं। श्रवणम, मननम, Nididhyasanam, निधिध्यासनम, Vandanam. Shravanam means you hear. Mananam means then you have to deeply think about these things. Nididhyasanam then means you have to make a plan to apply it in your life.
And Vandanam means you have to look up at Krishna and say, please instill this knowledge within the innermost chambers of my heart. श्रवणम का अर्थ है आपको सुनना है, मननम का अर्थ है आपको विचार करना है, और निधिध्यासनम का अर्थ है आपको योजना बनानी है, और वंदनम का अर्थ है आपको भगवान से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु मेरे हृदय में इस ज्ञान को गहराई में उतार दीजिए. Just like when you eat, the first process is you have to put something in your mouth. उसी प्रकार से जैसे आप खाते हैं तो आपको कुछ अपने मुंह के भीतर डालना है. But then at some point you have to close your mouth and you have to start chewing. लेकिन किसी समय पर तो आपको अपने मुंह को बंद करना पड़ेगा और उसको चबाना शुरुआत करना होगा. And then at some point you have to swallow it and digest it. और किसी समय तो आपको उसको निकलना होगा और जठराग्नि से वो जो है डाइजेस्ट हो जाएगी. So in the Krishna consciousness movement, sometimes we do a lot of shravanam, but not so much mananam, nididhyasanam and vandanam. इसी प्रकार से हम अपने कृष्ण भावना के जीवन में बहुत सारा श्रवणम कर लेते हैं, लेकिन उतना मननम नहीं करते या उतना निधिध्यासनम नहीं करते या उतना वंदनम नहीं. Once I tried to calculate how many lectures I must have heard in my life. एक बार मैंने गिनती की कि मैंने अपने पूरे जीवन में कितने क्लास को सुना है. Thousands, 10,000, 12,000 at least. हजारों, 10,000, कम से कम 12,000 को सुना ही है. But we must become deep thinkers. We must think, what is the implication of all of this knowledge? हमें जो है गहराई से विचार करना है और ये सोचना है कि ये सब जो ज्ञान है उसका क्या हो सकता है. Today, nowadays, most people are not thinking deeply. आजकल ज्यादातर लोग जो है सोचते नहीं हैं गहराई से. We hear something, they say in one ear, out of the other ear. हम कुछ सुनते हैं, वो बोलते हैं एक कान से सुनो, दूसरे कान से छोड़ दो. So therefore, find ways to be reflective about everything you're hearing. Write down notes. How will you apply this in your life? And then go in front of Krishna and say, I heard this in the class. Now Krishna, you please help me to realize this within my heart. If you go through that process, definitely Gyan will turn into Vigyan. तो आप जब भी क्लास सुन रहे हैं तो गहराई से विचार कीजिए और नोट्स बनाइए ज्यादातर, और फिर उसको देखिए कि मैं अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता हूँ. अंत में भगवान के सामने जाइए और प्रार्थना कीजिए कि ये जो सारा ज्ञान है वो आप गहराई से मेरे हृदय में उतार दें. Death is coming. मृत्यु आ रही है. We're laughing. हम हंस रहे हैं. But maybe that means we haven't truly understood what that means. लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हमें समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या है. One time someone came to our temple. He was coming for many months. He said, no, I don't have time to come to the Sangha group. I don't have time for any courses. I'm a big man in the world. एक बार एक व्यक्ति हमारे मंदिर में आया. वो बहुत महीनों से आ रहा था, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास समय नहीं है आपके किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या किसी भी संघ में आने के लिए, क्योंकि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ. But then somehow or other, the news came from Krishna, stage 4 cancer. लेकिन किसी न किसी प्रकार से खबर आई कृष्ण से कि स्टेज 4 आ चुका है, कैंसर का. Then all of a sudden there must be time to go to the hospital, to go for some therapy, to try to find some cure. Then you have to make time. तो अभी अचानक से आपके पास समय होगा हॉस्पिटल में जाने के लिए, अपने तबीयत को, कैंसर को ठीक करने के लिए, तब तो आपको समय बनाना ही होगा. But Krishna already gave the diagnosis many years ago. लेकिन कृष्ण ने पहले ही जो है बता दिया है, बहुत पहले. The diagnosis was already there. Mrityu sarva haraschaham. I come as death and I take away everything. कृष्ण ने बता दिया है डायग्नोसिस के रूप में
कि मैं मृत्यु के रूप में आता हूँ और आपका सब कुछ हर लूंगा। So it's serious business. Spiritual life is serious business. आध्यात्मिक जीवन जो है एक गंभीर व्यापार है। We can laugh, we can joke, but then we have to be serious about serious things. हम हंस सकते हैं, हम मजाक कर सकते हैं, लेकिन हमें गंभीर होना है आध्यात्मिक जीवन में। Hare Krishna, thank you for the class. I also have a question. As you travel across the globe, you come across so many varieties of breed of people. Which people? Breed of people you come across. And you preach to them. Many are not so welcoming to Krishna consciousness. How do you dodge your mind and keep yourself motivated and move on with the preaching? You meet many different type of people, and how do you maintain that? माता जी का प्रश्न है कि आप जो है संसार भर में घूमते हैं और तरह-तरह के व्यक्तियों से मिलते हैं, उनकी अलग-अलग तकलीफें होती हैं, तो कैसे आप उन्हें प्रचार करते हैं? First thing is, I was one of those breed of people myself. पहले तो उन व्यक्तियों में मैं भी एक था। It takes one to know one. जब मैं भी वही व्यक्ति हूँ, तो मुझे समझ में आता है। But the devotees were very kind, the devotees were very patient, the devotees were very forgiving and understanding. भक्त जो है बड़े दयालु थे, भक्त जो है बड़े कृपालु थे और वो उन्होंने हमें समझाया। I came to the Hare Krishna temple, I said, okay, one round I'll do. मैं हरे कृष्ण मंदिर में आया और बोला, ठीक है, एक माला जप करूँगा। For 2 years, I only did one round. 2 साल तक मैंने एक ही माला जप किया। But the devotees were very kind, very patient. भक्त जो है बड़े दयालु थे और धैर्यवान थे। They kept feeding me prasada. वो मुझे प्रसाद जो है देते रहे। So they were very patient. Srila Prabhupada was so tolerant. Srila Prabhupada was all alone in New York in 1965 in the winter. Srila Prabhupada was in the most difficult of situations, the most unwelcoming place in the world. But Srila Prabhupada was tolerant, so why can't we be tolerant? Srila Prabhupada बड़े सहनशील थे। 1965 की ठंडी में अकेले न्यूयॉर्क में गए थे और सब कुछ सहन किया। तो यदि श्रीला प्रभुपाद सहन कर सकते हैं सब कुछ, तो हम क्यों नहीं सहन कर सकते? Srila Prabhupada was living in the Bowery. Now I don't think I can tell you any place in India which is like the Bowery. श्रीला प्रभुपाद बावरी नाम की जगह में न्यूयॉर्क में रहते थे। अभी मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई ऐसी जगह है जिसका मैं नाम ले सकूं जो बावरी के जैसा होगा। Srila Prabhupada had come from Radha Damodar, Seva Kunj. In the middle of the night, he would only hear bhajans, kartals, mridangas, the peacocks, the cows. These were the sounds he was hearing every night. श्रीला प्रभुपाद राधा दामोदर कुंज सेवा संघ से आए थे। मध्य रात्रि में वो भजन सुनते थे, कीर्तन सुनते थे, मोर की सुंदर ध्वनि सुनते थे और वृंदावन की अलग-अलग दिव्य ध्वनि को सुनते थे। And then Srila Prabhupada came to the Bowery, and in the middle of the night, all he could hear was people screaming, police sirens, glasses crashing, and people having arguments. और फिर श्रीला प्रभुपाद बावरी न्यूयॉर्क में आए और मध्य रात्रि में क्या सुनते थे? पुलिस का सायरन, कांच का गिरना, लोगों का झगड़ा। Srila Prabhupada said, once I came into the Bowery and I had to walk over a dead person. श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, एक बार जब मैं बावरी में चल रहा था, तो मुझे एक लाश के ऊपर से गुजरना पड़ा। There was a dead person in the foyer, in the lounge. एक जो है मृत शरीर पड़ा था। We can't understand where Srila Prabhupada was and what he did. हमें समझ में नहीं आएगा कि श्रीला प्रभुपाद कहाँ थे और उन्होंने क्या किया।
So then we think, some difficulties I have, what are these difficulties? Yes, some people are unwelcoming, some people are not so receptive, but nothing like what Srila Prabhupada had to go through. तो हम सोचते हैं कि हमारी मुश्किल जो है वो श्रील प्रभुपाद के जीवन के सामने क्या है। कुछ लोग हमारा स्वागत नहीं करेंगे, हमें सुनेंगे नहीं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनाम अजाता शत्रव शांता साधव साधुभूषणा. We have to become saintly. Saintly means titikshava, tolerance, karunika, kindness, ajata shatru, no enemies. This is Vaishnava. हमें जो है साधु बनना है। साधु मतलब तितिक्षवा, सहन करना, कारुणिका, दया, Ajata shatru, अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं होता, ये वैष्णव है। surida, sarvadehinam, the friend of everyone. सभी का मित्र बनना है। Lincoln, Abraham Lincoln, he said, I kill my enemies by making them my friends. अब्राहम लिंकन बताते हैं कि मैं अपने शत्रुओं को मारता हूँ, उनको मित्र बनाता हूँ। So be kind, be patient, and in that way, not only do we give many people a chance, but we purify our own heart. तो आप धैर्यवान रहें, दयालु बनें, और इस प्रकार से हम बहुत सारे लोगों को अवसर देते हैं। When I was on book distribution, one devotee, the Sankirtan leader, he told me, the art of book distribution is learn how to take a no in style. जब मैं किताब वितरण करता था तो मेरे संकीर्तन लीडर ने मुझे बताया कि अगर आपको किताब वितरण अच्छा करना है तो आपको ना लेना है, वो भी स्टाइल में। On the street all day, no, 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 no. पूरा दिन रास्ते पर सभी लोग ना ना नहीं चाहिए, ना ना ना। Once I was on the street, there was one man, he was running. I said, hey sir, I'm a monk. He said, no time. He worked further. I said, no, we're giving out books. He said, no time. Then he walked further. I said, no, but do you think about life? He said, no time. And then he was in the distance. I said, have a good day. No time. It was interesting. व्यक्ति को भागते हुए देखा तो मैंने बोला, हे सर मैं साधु हूँ, नहीं मेरे पास समय नहीं है, सर मेरे पास कुछ किताबें हैं, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, ठीक है सर आपका दिन शुभ रहे, नहीं मेरे पास समय तो इसके लिए भी नहीं है। He was a good translator, right? He's good memory. Very good. Amazing. You have to pick. Too many hands, too much stress to pick. Someone has to pick. I just wanted to ask you 2 questions. First is over applying knowledge. Application makes it on the which is an exact way. How can I make it strong? Should I ask the second question now or first you answer the first one? Sorry, I couldn't hear properly. How to be more determined? Determined, okay. माधव जी का पहला प्रश्न है कि मैं कैसे और दृढ़ बन सकूं? See, I think you ask me a question that you already know the answer to. मुझे लगता है कि आपने वो प्रश्न मुझसे पूछा है जिसका उत्तर आपको पहले ही आता है। Have you got good grades in your studies? पढ़ाई में आपको अच्छे अंक आए हैं? Have you achieved something in your life that required discipline? अपने जीवन में आपने कुछ ऐसी चीजें प्राप्त की है जिसके लिए आपको डिसिप्लिन की जरूरत है? Many of you have brought children up in this world, isn't it? आप सब में से बहुत सारे जो है माँ बाप हैं। Many of you have established homes in this city of Mumbai. इस बॉम्बे शहर में आप सब में से कईयों ने अपने घर को खरीदा है। It all required hard work. It all required sacrifice. It all required determination. You already did it in your life for material things. ये सब के लिए
अधिक प्रयास की जरूरत है, श्रम की जरूरत है, त्याग की जरूरत है और नियमित होने की जरूरत है। आपने तो ये सब अपने भौतिक जीवन में पहले ही कर दिया है। If we put 20% of the energy that we've invested in our material life into our spiritual life, I think we would be flying. अगर हम अपने भौतिक जीवन में जितना परिश्रम करते हैं उसका सिर्फ 20% अपने आध्यात्मिक जीवन में डालेंगे तो हम जो है अपने आध्यात्मिक जीवन में उड़ान भरेंगे। But somehow we have this notion that in Krishna consciousness it will just happen automatically. लेकिन हमारा ये किसी न किसी प्रकार से विचार आ चुका है कि ये जो कृष्ण भावना आदत है ये अपने आप से हो जाएगा। So you have it in you to be determined, you have it in you to be disciplined. Now pray for this deeper conviction, this deeper urgency, this deeper inspiration to arise in your heart. तो आप सब में ये पहले से ही गुण है, दृढ़ता का, नियमित होने का। अभी आपको प्रार्थना करनी है कि ये जो है मुझे गहराई से और इंस्पिरेशन मिले। Behind me I have a danda. I wish it was a magic wand. मेरे पीछे जो है मेरा डंडा है। मेरी इच्छा है कि ये जो है जादुई छड़ी हो। I wish I could just touch it on your head and say, now you will be determined. मेरी ये इच्छा है कि ये इस डंडे को मैं आपके सिर पे लगाऊं और बोलूं कि अब से आप दृढ़ता प्राप्त करेंगे। But so far it didn't work. लेकिन अभी तक तो ये काम नहीं हुआ। इति ते ज्ञानमख्यातं गुह्यद् गुह्यतरं मया विमृशेदशेषेण यत इच्छा तथा कुरु. You know it, you heard it, you've been in all the classes, now you think about it, now you analyze it, then you do what you want to do. आपने सुना है, आपने समझा है, बहुत सारे क्लास को अटेंड किया, अभी आपको गहराई से विचार करना है और आप जो समझ में आता है आप वो कीजिए। My second question is, if we're not in the ashram, further in the temple, we do associate with material people and a lot. How do we safeguard our mind from getting swayed because it does help? माता जी का प्रश्न ये है क्योंकि मैं आश्रम में नहीं हूँ तो बहुत सारे भौतिक लोगों से आदान प्रदान करना पड़ता है, तो कैसे मैं अपने मन को बचाऊं? Of course, ashram devotees are also out there in the world associating with everyone. Everyone's in the same position. सभी जो है समान अवस्था में है क्योंकि आश्रम के भक्त भी जो है बाहर जा रहे हैं और आदान प्रदान कर रहे हैं। Let me share one principle with you which can help you in your life. एक सिद्धांत मैं आपको बताऊंगा जो आपके जीवन में आपको मदद करेगी। Don't just be scared about what could go wrong, but start getting excited about what could go right. इस विचार से कार्य मत करो कि क्या गलत होगा, इस विचार से कार्य करो कि क्या सही होगा। You can say, oh no, the non-devotees, maybe I'll get contaminated, maybe I'll get distracted, maybe I'll get deviated, maybe they will cause me to fall down. आप सोच सकते हैं कि ये जो भौतिक लोग हैं, ये जो है मुझे मेरा ध्यान भटका देंगे, मुझे प्रदूषित करेंगे, शायद मैं इनके वजह से गिर भी जाऊंगा अपने आध्यात्मिक जीवन में। Or you can see, here is a soul who knows nothing about Krishna. Maybe I can serve them. Maybe I can share with them. Maybe, just maybe, Krishna is in their heart and Krishna will speak to me through them. And then maybe we begin to look at the non-devotees in a different light. हम देख सकते हैं कि शायद ये जो व्यक्ति है, इसके हृदय में भी कृष्ण है, मैं इसकी कुछ सेवा कर सकती हूँ। शायद मेरे वजह से ये जो है कृष्ण पथ पर आगे बढ़ सकता है। Once I was going in a car to the mechanics to get the car fixed and the phone went off and I picked up the phone. एक बार मैं अपनी गाड़ी को लेके जा रहा था मैकेनिक के पास और वहाँ पर मेरे फोन की घंटी बजी। Now in London you're not allowed to drive with your, so then after 2 minutes
Police siren. लंदन में आप वाहन चलाते हुए फोन पर बात नहीं कर सकते, तो 2 मिनट के बाद पुलिस की गाड़ी मेरे पीछे आ गई। So the police called me over. Then he wind the window down. तो पुलिस ने मुझे मेरे खिड़की पे खटखटाया और मैंने बोला कि खिड़की को नीचे करो। So he said, "Sir, step out of the car." आप बाहर आइए। So I opened the door. You can imagine, 6'5" saffron monk. He was completely bewildered. तो मैं बाहर आया, आप कल्पना कर सकते हैं 6.5 फीट का जो है सैफ्रॉन डिवोटी, वो पुलिस जो है पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया। So then he looked at me and he said, "Sir, you were using your phone while driving, that's an offense." पुलिस ने मुझे देखा और बोला, साहब आप जो है अपने फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, वो भी वाहन चलाते हुए, ये अपराध है। So I said, no, I wasn't using the phone. I was just kind of cancelled the call. I wasn't actually speaking. So I was trying to make some excuse. तो मैं बोल रहा था कि नहीं पुलिस साहब कि मैं जो हूँ फोन पे बात नहीं कर रहा था, बस एक कॉल आया था, उसको काट रहा था, तो कुछ बहाना सोच के उनको बोल रहा था। Then he said, no, I have video footage. You were on the phone. I said, no, it was just for 10 seconds. I wasn't doing much. And then he looked at me and he said, Mr. Monk, the truth shall set you free. तो पुलिस ने बोला कि मेरे पास वीडियो है। मैंने कहा नहीं, सिर्फ 10 सेकंड की बात है। तो पुलिस ने बड़े कठोर शब्दों में बोला, साधु सत्य जो है आपको आजादी देगा। So I looked at him and I said, I should be saying that to you. तो मैंने उन्हें देखा और मैंने कहा उनसे कि ये बात जो है मुझे आपको बतानी चाहिए। I said, okay, I'm sorry. I shouldn't have done it. He said, I like you guys. I love the Hare Krishnas, but don't use your phone while you're driving. तो मैंने बार-बार उनसे क्षमा मांगी, तो पुलिस वालों ने बोला कि मुझे आप लोग अच्छे लगते हैं, मैं हरे कृष्णा से प्रेम करता हूँ, लेकिन अगली बार गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात मत करना। So Krishna can speak through anyone. तो कृष्ण जो है किसी से भी बात कर सकते हैं। So let us see our connection with those who aren't devotees of Krishna and see potential for Krishna consciousness being nourished in that situation. तो हम प्रयत्न कर सकते हैं कि अभक्तों को देखकर ये सोचें कि कृष्ण जो है हमें माध्यम बना सकते हैं और उनमें वो कृष्ण भावनामृत की क्षमता देख सकते हैं। I don't mind going on. You just tell me when we should. Let's see. Hare Krishna. Thank you very much, Maharaj, for a very nice class. So Maharaj, he was explaining about those 4 things: Shravanam, Maranam, Nididhyasanam, and Vandanam. Very nice point, Maharaj. And really happy to apply these things in our life. So Maharaj, we want to know practically, because suppose we are hearing one lecture, and in that lecture we get to know 10 different things. Suppose 10 different things. And then I am asking that whether we have to stop that class over there so that we can make a note and we have to think about that, and now we are praying and we are trying to apply that in our life, planning to apply something in our life. So then if we go on, then we will again hear different things and that point will leave behind. Again, if you are reading, we will get many things. So practically how to do this, because we will get so many things, and how to stick to one point like that. महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम क्लास सुनते हैं तो बहुत सारी बातें जो है हमें समझ में आता है, तो क्या हम उस समय क्लास को रोक कर उन बातों पे विचार करना शुरू कर दें कि कैसे मैं अपने जीवन में अप्लाई करूंगा? उसी प्रकार से जब हम किताब पढ़ते हैं तो क्या जब कुछ बातें आती है तो क्या हम रुक जाए और उन बातों पर विचार करना शुरू करें?
Everyone is different and everyone has to find the best way to absorb knowledge for their personality. सभी व्यक्ति जो है अलग हैं और सभी को जो है अपना रास्ता ढूंढना है कि कैसे ज्ञान को वो सोख सके। So some people read slower and they try to be more quality, and some people read quicker and then they make many notes. So different people learn in different ways. कुछ व्यक्ति जो है धीरे से पढ़ते हैं और गुणवत्ता लाते हैं, क्वालिटी लाते हैं अपनी पढ़ाई में। कुछ व्यक्ति जो है तेजी से आगे बढ़ते हैं और बहुत सारा नोट्स बनाते हैं। तो सभी व्यक्तियों का अलग-अलग तरीका है। So you find what works for you, what helps you to take that knowledge that you're hearing and apply it in your life. Experiment and just find the best way that works for you. तो आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि कौन सा रास्ता आपके लिए काम करता है और जो भी रास्ता काम करता है उसको स्वीकार कीजिए। We tell people, don't read to get through the book. Read so that the book gets through to you. हम लोगों से बोलते हैं कि पढ़ाई इसलिए मत कीजिए कि किताब को खत्म कर दो। पढ़ाई इसलिए कीजिए कि किताब जो है आपके हृदय में प्रवेश कर जाए। Most people are just reading to get through it, but we're not absorbing it. बहुत सारे व्यक्ति जो है पढ़ रहे हैं ताकि आगे फटाफट बढ़ सके, लेकिन उस ज्ञान को हम अपने हृदय में सोख नहीं रहे हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। So if you want to go slower, go slower. Find one point and try to deeply contemplate it and apply it in your life. यदि आप धीरे जाना चाहते हैं तो धीरे चलिए। एक बात को आप अपने हृदय में गहराई से विचार कीजिए। But another thing I'll say is that practically in Krishna consciousness, it will keep coming back on the same points anyway. एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि आपके कृष्ण भावनामृत के जीवन में उस बात पर आप बार-बार आएंगे। This philosophy never goes out of fashion. ये तत्व जो है कभी पुरानिक नहीं होता। Sometimes I meet people and we're saying the same thing, isn't it? Today I did not say anything that new. Basically everything I said, 90% you knew. मैं लोगों से मिलता हूँ और मुझे विचार आता है कि मैंने तो कुछ नया नहीं बोला हूँ। 90% जो भी मैं बोलता हूँ वो तो आप सबको पहले से ही पता है। So spiritual learning is like a spiral. Go round and round, the same books, the same stories, the same verses, the same speaker. So finally you come to the essence. तो आध्यात्मिक जीवन जो है एक चक्र है, वही तत्व है, वही श्लोक है, वही कथाएं हैं, वही स्पीकर भी है, लेकिन अंत में आप सार तक पहुंच जाएंगे। One more very small thing here. Suppose now Mananam, this thing is there where we have to contemplate. Where we have to contemplate what we have heard, what we have read. So sometimes it happens when we are chanting. That time, what we have heard in the lecture or what we have read, the whole pastime comes. So is it okay that time if while chanting it is coming, or we have to just avoid it? What exactly should be your mindset? प्रभु जी का प्रश्न है कि कभी-कभी जब हम जप करते हैं तो जो हमने समझा है क्लास से, किताबों से, तो हमारे मन में आता है। तो क्या ये चलेगा जब जप कर रहे हैं तो ये भी विचार आए कि मैंने क्या शिक्षा प्राप्त की? Could be worse. इससे और मुश्किल हो सकती है। If Shastra is coming in your mind while you're chanting japa, it could be much worse. शास्त्र अगर आपके जप में आ रहा है आपके मन में तो इससे भी और तकलीफदायक चीजें हो सकती हैं। But then later on we'll realize that this time if I focus on the holy name, then ultimately all of the things that I'm supposed to learn from that Shastra will come anyway. आगे हमें साक्षात्कार होगा कि अगर इस समय मैं नाम पर अपना ध्यान केंद्रित करूं तो जो भी शास्त्र का ज्ञान है वो तो मुझे मिल ही जाएगा। So if it happens, then we observe it, we accept it, but we try to come back to the holy name, because when chanting, let us chant, and when in the class, let us hear Hari Katha.
तो जब ऐसा होता है तो हमें अपने ध्यान को वापस खींचना है नाम पर। जब जप करते हैं तो जप पे ध्यान हो, जब पढ़ाई करते हैं या क्लास में बैठे हैं तो क्लास पे ध्यान हो। Hari Katha is said to be the Swarup Shakti of Hari Kirtan. हरि कथा कहते हैं कि स्वरूप शक्ति है हरि कीर्तन का। Just like Srimati Radharani is the Swarup Shakti of Krishna. उसी प्रकार से जैसे श्रीमती राधा रानी स्वरूप शक्ति है कृष्ण की। So by worshipping Srimati Radharani, then one can please Krishna in a better way. And so by hearing Hari Katha, one should be able to chant in a better way. तो जब हम श्रीमती राधा रानी की पूजा करते हैं तो भगवान को और अच्छे से आनंद दे सकते हैं। उसी प्रकार से जब हम जप करते हैं तो और अच्छे से जो है हम शिक्षाओं को ग्रहण कर सकते हैं। But when we are looking at Krishna, then we make a prayer to Krishna. And when we look at Srimati Radharani, then we make a prayer to Radharani because we focus on the task at hand. तो जब हम कृष्ण को देखते हैं तो कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। जब हम श्रीमती राधा रानी को देखते हैं तो उनसे प्रार्थना करते हैं। ध्यान देना है कृष्ण पे से जब प्रार्थना करते हैं तो कृष्ण पर, और राधा से जब प्रार्थना करते हैं तो श्रीमती राधा रानी। So I think maybe one or two more questions because then we are heading back. एक दो और प्रश्न। Prabhu is very enthusiastic. Hi, Prabhupada. What inspired you to take sannyas? हरे कृष्ण महाराज, ऐसी क्या बात हुई कि आपने संन्यास लिया? आप क्या इंस्पिरेशन मिला कि आप संन्यास? All of us are trying to dedicate our life in service to Krishna. हम सब जो है अपने जीवन को समर्पित करने की प्रयत्न कर रहे हैं कृष्ण की सेवा में। Therefore, as Srila Prabhupada said, I was always looking for better opportunities to serve. जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मैं हमेशा ये देखता हूँ कि और अच्छा अवसर कहाँ है सेवा करने का। So when the opportunity to accept the renounced order of life came, and with that opportunities to serve, and when then encouraged by the Vaishnavas, then we thought, why not? Let us try and give one life to Krishna. तो जब अवसर आया संन्यास ग्रहण करने का, अवसर आया और अच्छे से सेवा करने का, तो वैष्णवों ने जब प्रोत्साहन दिया, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस एक जीवन को भगवान की सेवा में लगा दिया जाए। I didn't see sannyas so much as an achievement, but I see sannyas as an opportunity. मैंने संन्यास को एक कोई अचीवमेंट की तरह नहीं लिया, उसे एक अवसर की तरह देखा। Grihe thako, vane thako, sada hari bole dako. Wherever you are, whatever situation you are in, stane stita, shruti gatam, tanuvan manobir. It's not so important, but we need to find the best situation in which we can serve. जहाँ भी आप हैं, जिस परिस्थिति में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें सबसे अच्छा परिस्थिति ढूंढना है जहाँ पर हम अच्छे से सेवा कर सकें। So it's a risk. तो एक रिस्क है। Is it a risk to take sannyas? क्या संन्यास लेना एक रिस्क है? What do you think? आप क्या सोचते हैं? Is it a risk to get married? क्या ये शादी रिस्क है? Everything is a risk. सब कुछ तो रिस्क है। Everything is a risk. सभी रिस्क है। But spiritual life is risky business. आध्यात्मिक जीवन जो है रिस्की व्यापार है। We have to pray and take shelter and make vows to Krishna wherever we are, whoever we are. And then we have to pray, Krishna, now I'm in your hands. You take care of me. I'm trying to serve you. जिस भी परिस्थिति में जहाँ पर भी है, हमें जो है वचन लेना है भगवान से, वचन देना है भगवान को कि हे कृष्ण, मेरी जो भी परिस्थिति हो, मुझे आप अपनी सेवा में लगाएं। So I'm very small, insignificant, so you please also pray for me. तो महाराज कह रहे हैं कि मैं बड़ा छोटा हूँ, तुच्छ हूँ।
Okay, this. Okay, yes, Prabhu, the most enthusiastic. Hare, Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. I will say, Prabhuji, we are blessed, all of us, that you have come all the way from UK, okay? And whatever information you have given in this entire class that you have come here, okay? And we fully agree with whatever you have said. Oh, glad to hear that. But one final message which you would like to give to everyone, okay? After attaining everything, after enjoying life and everything, but why people are still not satisfied? They still want more and more. After getting more, they want more. So, what is your message to each one of us, not only to us, but to everyone across the globe? महाराज, मैं आपसे एक अंतिम संदेश सुनना चाहता हूँ। इस पूरे संसार में लोग जो है मजे करते हैं, आनंद करते हैं, लेकिन तकलीफ भी मिलती है, लेकिन ये लालच जो है कभी खत्म नहीं होती। तो इसके बारे में आप कुछ विचार रखें। You earn a living by what you get, but you earn a life by what you give to others. You earn a living, in Hindi it will be difficult. You earn a living like a livelihood by what you get, but you earn a life by what you give to others. Sorry. आप अपने जीवन को प्राप्त करते हैं उससे जो आप कमाई करते हैं। Okay, let me say in different ways. Unless you develop a life in which you are serving others, you don't have a life. जब तक आप अपने जीवन को दूसरों की सेवा में नहीं लगाते, ये आपका जीवन है नहीं। Jivera Svarupa Hoy Krishnera Nitya Das. The spirit soul is an eternal servant of Krishna and is an eternal servant of others in the spirit of connecting them to Krishna. जो जीवात्मा है वो भगवान का नित्य दास है और बाकी सबका भी दास है। इस प्रकार से कि वो भगवान उस जीवात्मा को भगवान से जोड़ेगा। So people in this world are acquiring so much. 2 houses, 2 phones, 2 cars, 2 wives. Too much. तो इस संसार में लोग जो है 2 गाड़ियाँ, 2 बंगले, 2 बीवियाँ, ये सब बहुत कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। But it doesn't satisfy because it's not a life of giving. It's not a life of serving. It's not a life of helping others to find happiness. And therefore there's no happiness. लेकिन ये संतुष्टि नहीं देता जीवात्मा को, आनंद नहीं देता, क्योंकि ये जो जीवन है वो दूसरों को कुछ देता नहीं। ये जीवन जो है दूसरों की सेवा नहीं करता। So therefore, try to build a life of service. Try to see, how can I serve Krishna in this life? How can I serve my family, my friends? How can I serve the wider population? And in this life of service, then you will find great happiness. Don't try to be happy. Don't try to be happy. Just try to serve. अपने आप को आनंद के अवस्था में डालने का प्रयत्न मत कीजिए। आप अपने जीवन को कैसे दूसरों की सेवा में लगा सके, भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, मित्रों, परिवार की सेवा में लगा सकते हैं, इस जगत में जितने भी व्यक्ति हैं उनकी सेवा में कैसे लगा सकते हैं, उस पर विचार कीजिए, उस पर कार्य कीजिए, तब आपको आनंद अपने आप मिल जाएगा। Srila Prabhupada said, I have no other motivation. I am only planning how people can become happy. श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे मन में और कोई विचार नहीं है, एक ही विचार है कि कैसे इस संसार के लोग खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। So one who has this seva bhav, they are wealthy. तो जिसमें ये सेवा भाव है, वो असली में ऐश्वर्यवान है।
So here in this beautiful temple in Juhu, in this yatra, in this most important city of Mumbai, you have unlimited opportunities to preach, to serve, and to expand the greatest movement on earth. So we wish you the very best in this wonderful opportunity that you have. Hare Krishna. गुरु में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है बम्बई में आपके पास अनगिनत मौके हैं प्रचार करने के लिए। Thank you so much, Srila Prabhupada ki jai. हरे कृष्णा। तो सभी लोग कहते थे अभी महाराज एक्चुअली उनको जल्दी है, वो वापस चौपाटी जाएंगे, उनका एक और प्रोग्राम है और कल सुबह 8 बजे महाराज यहाँ पे आएंगे। वो भागवतम क्लास देने वाले हैं। कल मंडे है तो चैतन्य चरितामृत क्लास होगा और कल रूप गोस्वामी का तिरुभाव तिथि है तो महाराज श्री रूप गोस्वामी के ऊपर चर्चा करेंगे और उसके बाद महाराज के पास समय होगा कल। तो अगर आप लोग के पास और प्रश्न है तो आप लोग कल आइए और जो सुबह का क्लास है उसके बाद कैंडल हॉल में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं महाराज से। जैसे हम लोग सोचते मन में चलो पूरा लाइफ कृष्ण को देंगे, हम सोचते पूरा लाइफ कृष्ण को दे देंगे और जो भी आते तो भी कृष्ण को लाइफ में लगाएंगे। लेकिन इसी बीच में मन होता है कृष्ण को देना चाहिए पूरा आजीवन तक मन प्रचार करके मरे, लेकिन बीच में अनेक डिस्टर्बेंस है, ये प्रॉब्लम लेकिन ये रहते हुए भी हमारा माइंड ये भी सोचना चाहिए कि हम अपने टाइम तक भगवान प्रचार करके मरे, कैसे पीछे रहेगा। प्रश्न ये है, the question is that He's getting tired now. We have the thought process that I will completely surrender myself in the service of the Lord, and whoever comes, I will make him also surrender. But when we are in the process, then there are a lot of disturbance that comes because of which his thought process gets disturbed of surrendering everything to the service of the Lord. So how can I save myself? Every day, just try to surrender a little bit more. More important than perfection is progress. Sometimes when we are too focused on the ultimate, then we don't even take 1 or 2 steps forward. So every day, just progress. हर रोज जो है आप थोड़ा थोड़ा प्रगति करने का प्रयत्न कीजिए। कभी-कभी जब हमारा आंख जो है लक्ष्य पर रहता है, अंतिम लक्ष्य पर रहता है, तो हम भूल जाते हैं प्रक्रिया को। Utsaha nischaya dhairyat. You have to be enthusiastic, but you also have to be patient. आपको जो है उत्साही होना है, लेकिन आपको धैर्यवान भी होना है। You need to have a cool head. आपको जो है ठंडा दिमाग की आवश्यकता है। When Srila Prabhupada was in London and a lady reporter, she asked him, "Why do you shave your head? Why do you shave your head?" एक बार श्रील प्रभुपाद लंदन में थे और लेडी रिपोर्टर ने प्रभुपाद से पूछा कि आपने अपने सिर क्यों मुंडवा लिए हैं? So Prabhupada looked at her and said, "Why do you shave your legs?" प्रभुपाद ने उस लेडी स्त्री से पूछा कि आपने अपने पैरों को क्यों शेव किया है? Prabhupada said, "We prefer warm legs and a cool head." प्रभुपाद ने कहा कि हमारे जो पैर हैं वो गर्म रहे और हमारा जो सिर हो वो ठंडा रहे, वो हमें अच्छा लगता है। So it will come. Prabhuji, your enthusiasm, your love, you've served so many devotees. All the mercy is coming to you. You please share that mercy with me also. We're all going back home, back to Godhead by Srila Prabhupada's grace. We just have to carry on. प्रेम है जो भगवान की कृपा आपको मिल रही है, वो मुझसे भी कृपया करके आप वो कृपा शेयर कीजिए और हम सब जो है वापस भगवत धाम जाएंगे। तो दो अनाउंसमेंट है, एक है महाराज के 2 किताबें हैं यहाँ पे, गीता 3 और तत्व। ये दोनों किताबें महाराज ने लिखे हैं, आप चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं।
और अगर आपको चाहिए कि महाराज साइन करें तो कल आइए क्लास में, और कल क्लास के बाद महाराज के पास समय है वो साइन करेंगे। और अभी क्योंकि महाराज जल्दी में है तो प्लीज आप लोग कोई आगे आके कुछ प्रश्न मत पूछे या फोटो के लिए मत मांगिए, आप कल आके महाराज से प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी महाराज को निकलना है।